Today we will study another use of Gauss theorem to find out electric field, and this time we will use the charge distribution as a plane sheet of charge. Plane sheet of charge which is very long compared to the distance of the point where we are trying to find out the electric field. Like this is a very large sheet. We have made a very small portion of it, and there is a point here at certain distance r. This point is here. We want to find out what is electric field here, and what is given to us. The thing which are given to us is that this is a electrically charged sheet. The charge is spread throughout its surface, and therefore we will use the unit sigma charge per unit area. Because we are not sure about the area, we will take surface charge density. So sigma is surface charge density. इसके यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है. जितना बड़ा एरिया हमको लेना है, सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना चार्ज हमको मिल जाएगा उतने एरिया के लिए whenever we need the calculation. ओके, अब सिर्फ हमको ये ही दिया है, और ये कि पॉइंट P एक पॉइंट है आउटसाइड. इसका कुछ यहाँ से डिस्टेंस होगा. लेट अस से दिस डिस्टेंस इज r. यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ओके, अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन मेथड. गॉसियन मेथड के 4 स्टेप आपने पिछले लेक्चर में देखे. नंबर 1, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा, एंगल बिटवीन ई एंड ए. दोनों की सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसी गॉसियन सरफेस सोचिए. नंबर 2, उस गॉसियन सरफेस के लिए उसकी पूरी सरफेस पर ईडीएस कैलकुलेट करिए. कैलकुलेट ईडीएस फॉर द कंप्लीट सरफेस, क्लोज्ड सरफेस ऑफ दैट गॉसियन सरफेस. थर्ड स्टेप, फाइंड आउट हाउ मच इज द चार्ज विद इन दैट गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो देखिए. एंड फोर्थ, अप्लाई गॉस थ्योरम. नाउ वी आर अगेन starting this. So what should be the Gaussian surface here which has got symmetry? Symmetry of what? Electric field. So first we try to find out, we know it, that what should be the shape of electric field here. If it is a plane surface and there are charges here, the electric field lines will be perpendicular to the sheet. If they are perpendicular, after going certain distance they will try to diverge, but here it's not possible for it to diverge because there are other charged particles. यहाँ से एक लाइन ऐसे निकलती है, तो यहाँ से भी एक लाइन ऐसे निकलती है. because of this line, ये लाइन ऊपर नहीं मुड़ सकती, ये लाइन नीचे नहीं मुड़ सकती, क्योंकि सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? जैसे हमने एक टूथब्रश देखा, टूथब्रश के सभी ब्रिस्टल्स ऐसे पैरेलल होते हैं, बूट पॉलिश के ब्रश के सब पैरेलल होते हैं. सेम ये भी वैसा ही होगा. ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है. दूसरी तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ भी ऐसे ही है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखकर, कंसीडर करके हमको एक गॉसियन सरफेस बनानी है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सिमेट्री रहे और थीटा की भी सिमेट्री रहे. आफ्टर ट्रायल एंड एरर्स हमने स्फीयर लगा के देखा, सिलेंडर लगा के देखा, एंड व्हाट वी फाइंड फाइनली दैट वी कैन मेक ए सिलेंडर which is perpendicular to this surface. Cylinder which is perpendicular to the surface. और इस तरह का सिलेंडर बनाया कि उसकी प्लेन सरफेस P उसकी प्लेन सरफेस में आएगा, ये, और ये सिलेंडर इसको पंक्चर करते हुए ऐसे चला जाएगा. इसके अंदर से जाकर पीछे की तरफ निकलेगा और पीछे ऐसे आ गया.
तो ये आप ये मान सकते हैं एक शीट है और उस शीट में हमने एक सिलेंडर ऐसे लगा दिया, आधा इधर निकला हुआ है आधा इधर निकला हुआ है। अगर ये डिस्टेंस इसका r है तो ये वाला डिस्टेंस भी हम कितना लेते हैं, r, फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हम ये r इक्वल करके ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस सरफेस पे होगी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस सरफेस पे होगी। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स। ये उसकी कर्व्ड सरफेस है। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। ओके, इस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये अभी आपने देखा इधर है, एरिया वेक्टर किधर है। ओके, दोनों चीजों को बारी बारी से देखते हैं। यहां पर एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे होगा, एरिया वेक्टर। इस लोकेशन पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस लोकेशन पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा। नाउ एवरीवेयर यू सी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच यहां भी एंगल जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है। दैट इज सिमेट्री। हर लोकेशन पे थीटा की वैल्यू सेम है, दैट इज सिमेट्रिकल। और यहां से हर पॉइंट का डिस्टेंस r है, therefore strength of the electric field is also symmetrical. So this plane surface is a symmetrical surface with respect to electric field and theta. Okay, इधर वाली plane surface भी same, this is r and here this is area vector and this is electric field. Again the angle is same, zero at every point, zero at every point, zero. Now what about the curved surface? In the curved surface area vector is, if this is the curved surface, this is the area vector. So here area vector is normal to this, here it is normal to this, and this is electric field. So the angle between electric field and area vector is 90 degree. Don't worry, 90 degree here. How much it is here? 90 degree. If you come to this surface, यहाँ पर area vector देखिए इधर, and where is electric field? Like this. How much is the angle between the two? 90 degree. What is the angle here? This is the surface. Here is the area vector. This is electric field, 90. Here this is the area vector, this is electric field, angle is 90. So for complete curved surface at every point theta is 90. So we can consider it as a part of the Gaussian surface. हर वो surface जिसके हर पॉइंट पर E और थीटा एक जैसा हो उसको हम गॉसियन सरफेस का एक पार्ट मान सकते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस plus these two plane surface, this total makes a closed surface and we need a closed surface. So this is our Gaussian surface, एक सिलेंडर जो दोनों तरफ से बंद है। So ये हमने Gaussian surface बना ली, E की सिमेट्री भी देख ली, थीटा की सिमेट्री भी देख ली, and now we will write this as our step number 1. So we explain it, we write it this way. Consider a Gaussian surface in the shape of a closed cylinder whose axis is normal to the surface and extends equal on both sides, equal length on both sides because of symmetry. Here E is same at every point of the plane surface and at every point of the curved surface. Similarly, theta is 0 at every point of the plane surface, symmetry, and theta is 90 degree at every point of the curved surface, symmetry of the curved surface. This is explanation we have given of our Gaussian surface. Now step number 2, we will calculate closed integral EDS, that is the flux linked to the Gaussian surface.
Now this closed integral, we divide it into two parts, one for curved and one for flat front surface and one for flat this is flat 1, flat 2. This will be E ds cos 90. This is E ds cos 0, E ds cos 0, because at flat surface the angle between area vector and E, that is 0. So 0, 0 for flat, here 0, here 0, 0, 0 for flat, and 90 degree for curved. Cos 90, cos 0, cos 0. Now in the second point we see that this closed integral EDS in the next step, EDS cos 90 makes it 0. Cos 0 is 1, so it is closed integral EDS for the flat surface. Integral EDS for the flat surface. So we have it 0 plus integral for flat surface E ds plus integral for flat surface E ds. Cos 0 is 1. Now this is equal to, for flat surface E at every point is same, so this is a constant, is not to be integrated, will come out. Integration of ds, okay, see in the diagram, ds will be the total area. Let us consider the total area to be S, surface area, this. So this area of cross section is surface area S, that will be here, that will be here, that will be here. So ds integration we will take as S. So this is ES plus ES to ES. This is the total flux linked with this Gaussian surface we have made. Now we come to the third point of calculation, that is how much is the charge within the Gaussian surface. Charge within Gaussian surface. Okay, how do we find the charge? That's very easy. सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके अंदर में कितना एरिया आता है? इज दिस चार्ज विद इन इट? नो. दिस चार्ज? नो. दिस चार्ज? नो. नो. वेयर इज द चार्ज विच कम्स विद इन द सिलेंडर? आंसर, द सिलेंडर गोज एंड पंक्चर दिस सरफेस. इस सरफेस को पंक्चर करके जाता है. तो अगर हमारे पास ये सरफेस है, चार्ज सरफेस, ये सिलेंडर ऐसा सर्कल आया और आकर इसने यहाँ पंक्चर किया और पंक्चर करके इधर निकल गया, तो इस सरफेस में जितना चार्ज है वो चार्ज क्या कहलाएगा? इनसाइड द सरफेस. रेस्ट ऑल द चार्ज विल बी आउटसाइड द सरफेस. सो when we want to calculate charge inside the surface, we should calculate only this charge. Okay, let's do that. And this area is S and per unit area is sigma, so the total charge will be sigma multiplied by S. So we write here charge within Gaussian surface Q is equal to sigma into S. This is the charge within it. Now fourth point, applying Gauss theorem. What is Gauss theorem? Closed integral EDS is equal to Q upon epsilon naught. Put values.
closed integral E ds, the final value is 2e into s, 2e into s. The value of q, sigma into s, sigma into s upon epsilon naught. So solve one step more, SS is cancelled. So electric field intensity E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is electric field E, and where have we thought this E is? Answer, this E is here, because here we have made E into ds integration. So that is the value of E at this place. And what is this value? This value is sigma into 2 epsilon naught. Strangely देखिए, इसमें सिर्फ सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी है, इसमें R नहीं है, R नहीं है. What does that mean? इस सरफेस से आप 1 सेंटीमीटर दूर जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिलेगा. Go 3 सेंटीमीटर अवे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. Will it be weaker, stronger or same? Answer, it will be same. Distance does not matter. Why? Because mathematically there is no R in our term. This. So E is independent of R. पर ये कैसे हो गया? हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा. बट रिमेंबर, वो हमने पढ़ा है पॉइंट चार्ज के लिए. दिस इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, इट इज ए कंटिन्यूअस चार्ज ऑन ए सरफेस. तो इसको कंसीडर करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं एक ब्रश जैसे. ये ब्रश, और इस ब्रश में ये सभी लाइंस कैसी हैं? इक्वी डिस्टेंस in the same direction. This is a homogeneous electric field. Okay, symmetrical electric field. यहां पर प्लेट है, यहां पर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है. एक एरिया बनाया, एक रिंग, यहां रिंग इतना बड़ा, इसके अंदर में लाइन की डेंसिटी देखिए 1 2 3 लाइन. टेक दिस रिंग अवे हियर. Same ring, when we take this much away, this much, how many lines are going through it? 1 2 3, again 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी में कितना डिफरेंस आया? नो डिफरेंस, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड. और अब आप समझ गए कि अगर हम इसको ऐसे ले जाएंगे, दिस वे, यू ब्रिंग दिस रिंग हियर टू मेजर द डेंसिटी. डेंसिटी इज अगेन 3, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मिलेगा. दिस इज स्पेशलिटी ऑफ शीट, स्पेशलिटी ऑफ शीट. ये चीज आपको लाइन में नहीं मिलेगी. लाइन का ब्रश के लाइंस कैसी होती है? ये फैल रही होती. पॉइंट लीजिए तो सब तरफ फैल रही होती. सो द मोमेंट यू गो अवे, द नंबर ऑफ लाइंस विल डिक्रीज इन ए पर्टिकुलर एरिया. पर ये वाली शेप ऐसी होती है कि सभी लाइंस ऐसी हैं, कहीं पर भी आप एरिया लो, उस एरिया में नंबर ऑफ लाइंस इक्वल आएंगी. दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम फॉर एनी डिस्टेंस. बट देयर इज ए लिमिटेशन. वी से दैट दिस शीट इज इन्फिनिटली लार्ज. इन्फिनिटली लार्ज का मतलब क्या होता है? अगर इन्फिनिटली लार्ज नहीं होगी तो क्या होगा? तो आंसर है कि अगर इन्फिनिटली लार्ज नहीं होगी तो ये लाइन तो ऐसे स्ट्रेट जा रही है, फाइन, ये स्ट्रेट ऐसे जा रही है, पर यहां की जो लाइन है ये लाइन ऐसे चली जाएगी. ये तो अगर हम उस रिंग को, ये वाले रिंग को अगर यहां ले जाएंगे तो अब देखिए ये लाइन 2 हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया. Why? There is a corner.
This is known as curling. So at the corners there is curling. And because of this, the electric field will become weak. Now I say that my sheet is very large. तो ये कर्लिंग कहाँ जाएगी? बहुत ऊपर. इतनी ऊपर कर्लिंग चली जाएगी कि ये मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कहीं भी रखूंगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही मिलेगा. दिस शीट हैज टू बी वेरी लार्ज. पर इन्फिनिट लार्ज तो कोई शीट होती नहीं है. ठीक है. सो वी टेक इट एज अप्रोक्सीमेशन. जैसे ये वाला बोर्ड इतने डिस्टेंस के लिए इन्फिनिट लार्ज है. नॉर्मली वी से इफ इट इज लार्जर देन more than 5 times, more than 10 times larger than the distance, more than 10 times than the distance, then it is infinite compared to this distance, and this thing will apply. Okay, so infinite means very large compared to this distance. So now we understand electric field due to a surface of charge is sigma upon 2 epsilon naught. This is a very versatile formula, very useful formula, and you must remember this relation. That is, electric field due to sheet of charge is equal to charge density 2 epsilon naught. Simple relation. This is constant of the medium, तो E is equal to sigma. जितनी चार्ज डेंसिटी होगी, यहां चार्ज डेंसिटी 5 है, 1 2 3 4 5, बस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. वी हैव मेड इट सो सिंपल. जितने चार्ज उसी को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, नाउ गो फॉर वेरिएशंस, स्पेशल कंडीशंस. इफ आई टेक वन शीट, वन पेपर शीट and give it the charge and find electric field here, I find it is not sigma upon 2 epsilon naught, it is sigma upon epsilon naught. Why? Because when I take the sheet, the charges are here, I give it charge, the charges are spreading here plus the charges are spreading here. दोनों तरफ इसमें चार्ज आ जाते हैं. I can't stop it. इधर भी इधर भी. अब जब यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दैट इज ड्यू टू वन सरफेस, बट देयर इज अनदर सरफेस. दिस सरफेस ऑल्सो मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड्स. दिस सरफेस ऑल्सो मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड्स. सो हियर this surface makes electric field sigma upon 2 epsilon naught. This surface makes electric field sigma upon 2 epsilon naught. So this is sigma upon epsilon naught. So remember the difference between the two words, sheet and surface. Surface means one, sheet means two surfaces. So this is what we have done here. What we did here was only one surface, only one layer of charge. But practically when we use a sheet, there we cannot make it as thin as containing one charge only. There has to be certain thickness, and there will be have to be two surfaces on two sides of the sheet. Okay, दोनों तरफ उसकी दो सरफेस हो जाएंगी और उन दोनों सरफेस के कारण दोनों का इफेक्ट आएगा, and this will be sigma upon epsilon naught. Now we will take some special cases, that is combination of surfaces. दो सरफेस को हमने आमने सामने रखा, दोनों को चार्ज दे दिए, तो उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? दिस वी विल स्टडी नाउ. सी दिस. These are two plates. This surface, let us say two surfaces. This surface is positively charged and similar charge. So this is also positively charged. But maybe their charge density is same,
maybe it is different. So we take a case where charge density is different. It has got charge density sigma 1, sigma 2. ये दोनों को हमने लगाया और अब हम देखते हैं इसके चारों तरफ फील्ड कैसा है. Let us take this point here. This makes an electric field here. How much will be this electric field? Answer: this electric field will be E here is equal to E due to this plate is sigma 1 upon 2 epsilon naught. ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला था sigma upon 2 epsilon naught. We are taking it as a single surface. Okay. What is the direction? This is the direction. From plus it is going away. If this direction is towards left, then we can make it minus. Right. Now this will make here again this. डिस्टेंस कम या ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्क नहीं पड़ता. तो ये वाला E कितना होगा? This will be equal to again this direction minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. तो टोटल E कितना हुआ? Net E. Total E here is sigma 1 plus sigma 2 minus 1 upon 2 epsilon naught. 1 upon 2 epsilon naught common, minus common, and sigma 1 plus sigma 2. This is total E. Suppose a special case if ये दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है और दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हमने कितनी मान ली? सिग्मा. सो दिस विल बी सिग्मा, this will be sigma, 2 sigma, 2 cancelled, and what we get here is minus, I will write it here, sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma. Then how much is E equal to? Minus sigma upon epsilon naught. This is the case on outward left side. Negative means in this direction and sigma upon epsilon naught. Now we will see the case within. Take a point here. This makes electric field in this direction. How much is this electric field? This electric field is equal to again sigma upon 2 epsilon naught, and the direction is towards right, so this is plus. This makes electric field here. Again this electric field 2 is sigma upon 2 epsilon naught, but the direction is here, so this is minus. So what is the net E? This is sigma 1, this is sigma 2, so we can write it 1 upon 2 epsilon naught. This is sigma 1 minus sigma 2. This is electric field within it. अब अगर ये दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इक्वल कर दीजिए सिग्मा सिग्मा. Sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma. Then E is equal to 0. This is very important. How much is electric field inside? 0 if their charge density is same. Now we take on the right side. On the right side, this makes electric field E1 due to plate number 1 is sigma 1 upon 2 epsilon naught. E due to plate number 2, this is sigma 2 upon 2 epsilon naught. Therefore total E is equal to 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. This, and this is positive, that means towards right. This is negative towards left, and this is 0 in this case. Okay, if sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, then E is equal to sigma sigma 2 sigma, 2 is cancelled, so sigma upon
epsilon naught. This is electric field, this is electric field. So what does it give us result? Outside there will be electric field here, and inside the electric field will be 0. It is simply like a box of electric charges. Here electric field this direction, here electric field this direction, and inside 0. Okay, now see the second case. In second case, again left, this is E1 is equal to minus sigma 1 upon 2 epsilon naught. Because of this is the direction towards minus, mind it, and because of this direction its sign will be plus sigma 2 upon epsilon naught. This is E due to plate number 2. Then how much is the total E? E1 plus E2, 1 upon 2 epsilon naught common. Inside we get plus sigma 2 minus sigma 1. And if sigma 1 is equal to sigma 2, then this will cancel each other and we get E is equal to 0. So here outside, if the two charge densities are similar, plus and minus, then it will be almost 0. Okay, now within, take this point, this makes electric field E1, which is in this direction, so this is positive, and how much it is? Positive sigma 1 upon 2 epsilon naught. This makes here towards minus this. You see arrow is in this direction, so this is also positive. So E2 is also positive. How much? Sigma 2 upon 2 epsilon naught. And now if we total up the two, E1 plus E2, both are positive. So 1 upon 2 epsilon naught common, and what we get here is sigma 1 plus sigma 2. This is net electric field within it. If sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, then how much will be the electric field inside the 2? Sigma plus sigma 2 sigma upon 2 epsilon naught. So this is sigma upon epsilon naught. ये रिजल्ट बहुत वर्सेटाइल है, कैपेसिटर बनाने में काम आएगा, बार बार आपको पूछा जाएगा ये क्या रिजल्ट है. The result is inside the two plates, one is positive, one is negative. What is electric field inside? Inside electric field is sigma upon epsilon naught. What is sigma? Charge density on both the plates. इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, तो ये आएगा. और अगर अलग अलग हैं तो ठीक है, दोनों को हम ले लेंगे. और अगर दोनों एक जैसा है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब राइट साइड में देखिए, दिस माइनस विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. माइनस sigma 2 upon 2 epsilon naught. This plus will make electric field in this direction. And how much will be the total E? The total E will be plus minus 1 upon 2 epsilon naught common, and what we get here is sigma 1 minus sigma 2. In case both are equal, sigma 1 and sigma 2, what do we get here? E is equal to 0. So see here, on the left side E is 0, right side E is 0, in within it is double. Double means sigma upon epsilon naught. Compare with this. Within it is 0, outside there is electric field. So if they are same charges, outside we have electric field, inside it is 0. If they are opposite charges, inside we have electric field, outside it is 0. So this you have to remember,
and this we are going to use in next calculation, that is calculation of capacitor. So this is done with help of Gauss theorem.